This is a turtle hatchery on the beach of Velas, a tiny coastal village in Maharashtra. आता आपण चेक करू हॅचलिंग जर असेल तर पाण्यापासून त्यांचा 50 ते 100 मीटर अंतर सोडू. आता मी बॅरिकेड लावत नाही लोक कमी असल्यामुळे. It is also known as the nesting ground of the Olive Ridley turtles that come to this beach every winter to lay their eggs. Those eggs are then kept safely in this hatchery and protected by the locals until it's time for them to hatch. Every in the month of March, tourists line up on this beach to watch this natural spectacle of turtle hatchlings being released back into the sea. For many, this is a one-of-a-kind experience, as it's rarely possible to see turtle hatchlings up close in their natural habitats. I came for my art project. The topic was at the race, so I had to get some pictures and I wasn't really sure what to do. I was thinking like conservation work or something, but then I thought I'll do like turtles going into the sea because it's a race for them to survive. I think it was really good because sometimes in like other places people can go too close to the turtles. I think they maintain a good distance here. Velas happens to be one of the main hatcheries on the Konkan coast. But it wasn't always protected. There was a time when the turtle eggs and nests were being destroyed by the local community itself. चिपळूण की सह्याद्री निसर्ग मित्र जो एनजीओ है, इन्होंने 2002 में ये टर्टल कंजर्वेशन का काम यहाँ पर शुरू किया. लेकिन उसके पहले गांव के लोगों को पता था कि समुद्र से कछुए आते हैं, रेत में अंडे देते हैं. गांव के लोग समुद्र में जाकर रेत पर बैठ जाते थे और जैसे ही उनको अंडे देने वाली फीमेल दिखाई देती थी तो उसके अंडे वो जब अंडे देना शुरू करती है तो उसके अंडे चुराकर या तो खुद खाते थे, बेचा करते थे. तो काफ़ी सालों से गांव के लोगों को पता तो था कि यहाँ पर टर्टल आते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता नहीं थी कि उस अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं या फिर उसका नेचर में रोल क्या है. The local conservation group, Sahyadri Nisarg Mitra, found a way to turn poachers into protectors. They started giving the villagers a role in the conservation process that could also become a means for their livelihood. Many of them were trained to become beach managers, who are now the gatekeepers of the hatcheries during nesting time. सबसे पहले तो इसमें पहला रोल आता है उन लोगों का जो हमेशा इन शोर पर घूमते हैं. यानी वो लोग जो अंडे चुराने का काम करते थे, उन्हीं लोगों को पहले इस टर्टल के बारे में जानकारी दी, उन्हें अवेयर करवाया कि आप इसके आगे क्या काम करने वाले हो और उन्हें उस तरीके के लिए कौन सा तरीका अपनाना होगा, वैसे उनको ट्रेनिंग दिए गए. और जो पोचर्स थे, इन्हीं लोगों को इस कंजर्वेशन एक्टिविटी का हिस्सा बना लिया. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रत्नागिरी डिवीज़न की तरफ से इन लोगों को एक महीने का एक अमाउंट फिक्स किया गया जो उन्हें मेहनताना दिया जाता है. और इस वजह से हर एक गांव में 2 बंदे ऐसे गांव काम के लिए रखे गए जो इन अंडों को प्रोटेक्ट करेंगे, उन हैचलिंग को रिलीज करेंगे. Today, nearly 65% of the baby turtles are successfully released into the sea by the locals. What started out as a community-led conservation activity has now evolved into a popular ecotourism destination in Maharashtra. It helps in creating awareness about this threatened species, and it also provides an opportunity to the visitors to observe this species up close in their natural habitat, and they can witness the journey of this beautiful creature from nest to the sea. And when you can see and experience something, then like you will appreciate them and you will have that urge to conserve them or know more about those species. So this is where the ecotourism comes in picture. It connects the species, habitat and the visitors. Siddhi and her family have been hosting tourists who
who come to see the turtles for nearly 7 years now. Their home is converted into a homestay every year in time for the Velas Turtle Festival. म्हणजे होमस्टे चालू झाल्यापासून आमचं खूप म्हणजे व्यवसाय चालू झाले. म्हणजे काहीच नव्हतं गावात. म्हणजे काय मजुरी करायचा. आता होमस्टेमुळे सगळ्यांना पैसे भेटत आहेत. टुरिस्ट येतात. खूप टुरिस्ट येतात. म्हणजे पुण्यावरून मी 1 वर्ष म्हणजे कामाला जाते. म्हणजे काम आहे. कामावरती 2-1.5 महिना सुट्टी काढते आणि इथे टुरिस्ट घ्यायला येते. खास टुरिस्टसाठी. New work opportunities seem to be a draw for the village youth as well. 28-year-old Abrar left his job in the Middle East and came back to Velas to set up the first camping-style homestay of the village. पहले इस गांव को कोई नहीं जानता था. ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंडिया का एक लास्ट कोना ही है, समझ लो. वेलास्ट एक लास्ट कोना है अपना. तो जब टर्टल फेस्टिवल की वजह से आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है, वेलास टर्टल फेस्टिवल के हिसाब से जाना जाता है. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोग के लिए कि जिसकी वजह से गांव के बहुत सारे लोग, जैसे मैं और मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, जिनका कुछ ना कुछ एक इनकम सोर्स स्टार्ट हुआ है. लोग आते हैं, गांव को देखते हैं, एंजॉय करते हैं. उन लोग को भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, पीस मिलता है यहाँ पे आके. Nearly 80% of the homes in Velas today are running businesses that are directly connected to turtle tourism. The absence of commercial hotels is also working to keep the rural experience as authentic as possible for tourists. I think they should continue with it. Once you start developing hotels and all, then it becomes tourism. It does not. I mean, then eco-tourism takes a backseat straight away. Then commercial considerations come in. उसने होटल बनाया, मैं बड़ा बनाऊँ, वो ज़्यादा कमाता है, मैं ज़्यादा कमाऊँ. So it should basically be homestay, and it should continue with that. But can ecotourism really work without damaging fragile ecosystems like these? It seems the community in Velas is determined to make the fine balance by focusing on ecological gains over commercial interests. एक जनरेशन ने गलती की थी, उस गलती को अब दूसरी जनरेशन सुधार रही है. इसीलिए गांव के लोगों ने ही ये डिसाइड कर लिया कि इस बीच के ऊपर कभी भी हम कोई भी सैंड एक्टिविटी नहीं करेंगे, वाटर स्पोर्ट्स नहीं होगा, बीच पर लाइट्स नहीं होंगे. आपको गाड़ी एक जगह पर पार्क करनी पड़ती है और वहाँ से पैदल करीब 7 मिनट चलना पड़ता है, तो आप बीच पर जहाँ पर ये कंजर्वेशन एक्टिविटी चलती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं. ये गाँव के लोगों ने लिया हुआ डिसीजन था और आने वाले लोगों ने भी इसे बहुत सराहा है. Another attempt at maintaining this fragile balance, authorities point out, has been through conserving natural habitats outside of the village and promoting them as alternative ecological attractions. Some of the areas where we have started ecotourism activities are very secluded and lesser known areas like Songa, which I was mentioning. So we are trying a combination of this kind of places where already tourists are going and the new sites, okay, so that there is a balance, there is no overcrowding of people, because we want to develop ecotourism in a sustainable way. But even as turtle hatchlings continue to be a crowd puller, they happen only once a year. The challenge for this rural community was then to sustain their livelihoods even after the peak tourist season. The answer, decidedly, lay in their very surroundings. टर्टल कंजर्वेशन में जो टर्टल फेस्टिवल होता है, इसमें लोगों के लिए 2 टाइम फिक्स किए हैं. सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे हैचलिंग रिलीज़ किए जाते हैं. लेकिन उसके बीच में जो वक्त होता है, उस दौरान लोग क्या करेंगे, ये जब एक बात दिमाग में आई थी, तो गांव के बच्चों को पहले बर्ड वॉचिंग सिखाया गया, उन्हें नेचर ट्रेल सिखाए गए. तो यहाँ हर तरह की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि वेलास 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके समुंदर है. तो समुंदर और इंटरटाइडल जोन में जो लाइफ होता है वो यहाँ पर देखने मिलता है. प्लस यहाँ पर करीब 1 किलोमीटर का रॉक पैच है, तो रॉक पैच पर भी वहाँ पर टाइडल पूल में आपको काफ़ी सारी डाइवर्सिटी मिलती है. Velas and 3 other turtle nesting villages have now diversified their conservation activities to attract more eco-tourists to this region. From curated nature trails to kayaking in the backwaters of the mangrove forests, to boat rides and dolphin safaris, the rural community is now being trained in the art of keeping the tourism trade active. पूर्वी कसं इकडची लोक मँग्रोव्ह लाकडासाठी सरपणासाठी
27-year-old Abhinay works as a guide in the mangrove forest near Anjarle village. During the turtle hatching season, he works as a beach manager. Once that's over, he takes tourists for a nature trail through this forest. जे मँग्रोव्हच्या मध्ये जे ओळ आहेत त्यामध्ये कायाकिंग आणि रो बोटिंग करवतो. जर आपण बघितलं की मँग्रोव्ह हे 12 महिने सदाहरित मँग्रोव्ह वनस्पती आहे. त्यामुळे आपल्याला तिथले जे बर्डिंग किंवा त्या मँग्रोव्हचे जे मडमध्ये मिळणारे छोटे छोटे जीव आहेत त्याच्याबद्दल पण माहिती देतो आपण. These locals are staying in those particular areas for generations. They know the area like no one else, and they have been conserving those areas. Now they know the various species name, they know the importance also. Now where we come into the picture is we provide them we provide them with some of the trainings like hospitality or how to speak to the tourism, how to take forward their knowledge, how to include the local knowledge, and how to influence a tourist to change their mindset. We want to go ahead in a very sustainable way where the tourist, locals and biodiversity can coexist and there is a win-win situation for all. This community-led ecotourism model, built on the heels of marine conservation, is a first of its kind in the Konkan region and has been adopted by 10 other villages along the coastline. The goal now is to expand it to other unexplored landscapes in rural Maharashtra, where conservation can be integrated as effectively with tourism opportunities. Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.